Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all to the new lecture of Anatomy 1. So today's topic would be about what nervous system of the human body is. We will see the general concepts of it and things like that. Before going to the new lecture, let us revise some points from the last lecture as well. We studied about the cardiovascular system and we saw what are the basic anatomy of the vessels, what arteries are, what veins are, and how they can performing different functions in our human body, as well as we saw what would be the composition of the blood is and how it is circulating in all over our body, even through the limbs and the peripheries, and the head that requires the most of it, and how it is getting filtrated in the kidneys and the liver, and what are the functions of the heart and how it is pumping and regulating the flow of the blood according to the need of the body. So now, in last lecture we studied about how the blood is being supplied to the whole body. Today we are going to see how the messages that are being supplied to the whole body are being transferred with the help of nerve cells or the neurons. So the learning objectives of today's lecture would be some basic unit of the nervous system. We will see what the neuron is. After that, we will see the structure of the neuron and the types of the neuron that are present in human body. Then the neuromuscular junction is there. We will see what the nerve and the muscle junction actually is and how it is controlling the movements of the human body. How and what structures are there present to control that message. Then we will see the anatomy of the central nervous system. We will see what are the structures of the brain. We will see what are the structures of the spinal cord basically are. So taking the overview of the center of the nervous system of the human body, we divide it into two anatomical parts. The first one is the central part that includes the brain and the spinal cord. Then comes the peripheral part that are taking origin from the spinal cord and brain, but it is supplying the periphery of the body. Let's see some subdivisions of the nervous system of human body. At first, there is the nervous system, which is divided into the central and the peripheral nervous system. The central nervous system, as I said, contains brain and spinal cord. The brain further had three portions or parts: the forebrain, the midbrain, and the hindbrain. The forebrain has two portions or two subdivisions: the telencephalon, the diencephalon. The telencephalon basically consists of the cerebrum, the cerebral cortex, and amygdala, the basal ganglia, and the hippocampus. While the mesencephalon contains basically thalamus and hypothalamus and also the pituitary gland. Then the midbrain, also named as mesencephalon, has cerebellum as its basic part, the tectum cerebellum as its basic part. It is the basic connecting portion between the forebrain and hindbrain. Then comes the hindbrain, which has two parts, the metencephalon and myelencephalon. The metencephalon has the portion called pons and the cerebellum as its part, and makes the brainstem basically. And the melencephalon has medulla as its portion that continues into spinal cord afterwards. So the spinal cord can be said to be a continuation of medulla. The brainstem, as we have heard the word many times, that the brainstem that is exactly present at the back of the neck, what is that? That is actually the structure combined with midbrain and hindbrain. That the midbrain, pons, and medulla will combine in the form of a longitudinal structure, making the brain stem. Let's see some parts of this peripheral nervous system. The first one is autonomic nervous system. The second is somatic nervous system. So the sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system are the further two divisions of autonomic nervous system. As we have already studied that the somatic nervous system is actually controlling the voluntary movements of the body,
or the movements that our muscle wants to perform on its own will, while the autonomic nervous system will be controlling some involuntary movements of the human body. The first one is the sympathetic, that will act only in the situation of fight, flight, or fright, when the person has some urgent work to do, or in the state of anxiety, or an accident has happened in front of them. These kind of the examples, the factors or the stimuli that are giving stress to the human body are actually activating sympathetic nervous system, while the parasympathetic nervous system act for the relaxation of the human body, that is normally working in our body when we are in a relaxed position or a situation. So, revising this flow chart, we have the central nervous system and the peripheral nervous system. Central nervous system consists of the brain and the spinal cord. Brain has further three parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain has telencephalon and diencephalon. The telencephalon basically contains cerebrum, while the diencephalon contains smaller parts, thalamus and hypothalamus. And the midbrain, also known as mesencephalon, basically connects the forebrain to hindbrain and contain a portion, a tectum portion of cerebellum. And then the hindbrain, which has two portions or subdivisions named as metencephalon and myelencephalon. Metencephalon contains pons and cerebellum, while the myelencephalon contains medulla. And on the other hand, the peripheral nervous system is divided into autonomic and somatic nervous system. The autonomic nervous system further divided into two types: the one that is acting in the situation of anxiety or when the quick work is required from the body, that is sympathetic nervous system, and the other, which is parasympathetic nervous system, that requires relaxation of the body and that works when a human is in relaxed position. So moving ahead, we can see the basic units or the cells that are making the nervous system of the human body. There are two cells of the nervous system. The first one is neuron and the second one is neuroglia. The neuron is the basic functional unit of the nervous system that is making the message to go from the CNS or PNS to the periphery of the body or the cells that require that message, right? While the neuroglia are the supportive kind of cells that are providing as a supportive function to the nervous system, that is giving it protection and the nutrition and all. So the basic unit of the nervous system, the neuron, also known as nerve cell, we will see that first of all. So a typical neuron is divided into three parts. Number one, soma or the cell body. Number two, dendrites that are basically giving the stimuli ahead, and then the axon that is also called the tail of the neuron. So here, the first one, you can see the soma or the cell body here in this picture. This, where the nucleus of the nerve cell is also present. After that, we have the dendrites. The branches that are giving from the soma or the cell body are called dendrites. These are shortened in length and more broader in structure. And then comes the tail or the length axon, right? It also has nerve endings on its end that are supplying the message to the muscle. For example, if it is containing a message from the brain and giving it to the muscle, then the message from the brain will be transferred to the nucleus of the nerve cell from these dendrites, and it will travel from the length of the axon, and with the help of nerve ending it will be delivered to the muscle cell. So this is the process, and here the yellow cells we can see over the length of the axon is the myelin sheath that is covering the axon, and this myelin sheath acts as the protective layer over the axon, while the neuroglia cells are these cells in the within the myelin sheath. These cells are the neuroglia cells, and here they are named as Schwann cells.
After that, let's see the classification of neurons. That on the basis of function, we divide neuron into three types. Number one is sensory, that is carrying the sensory message from the periphery part. For example, a finger. If a person have touched a burning surface or a very hot surface, then those burning signals or the hot signals will be carried through the sensory neurons. After that, there are interneurons that transmit message from one neuron to the other neuron. That the dendrites of one neuron will carry the information from sensory neuron and transfer it to the next neuron. Here in this picture we can see that here is a neuron, sensory neuron, that is carrying the message of this burning signals and is transferring to the other neuron. This is the interneuron and associated neuron that is transmitting message from one neuron to the other neuron. And then the motor neuron, it will contain signals from the or any response or the reflex response in response to the sensory stimuli and give a motor response to the muscle. So what they are trying to say कि कोई भी जब burning sensation हमारी skin में गई, हमारे सेल्स ने उसको डिटेक्ट किया, हमारे नर्व सेल्स ने और या फिर न्यूरॉन्स ने, और वो हो गए सेंसरी न्यूरॉन्स. जब वो एक दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल देंगे एक चेन को मेंटेन करने के लिए, तो वो हमारे हो जाएंगे इंटर न्यूरॉन्स. और फिर जब हमारा ब्रेन सिग्नल देगा कि इन रिस्पॉन्स टू दैट बर्निंग सेंसेशन, अब अपना हाथ हटा लें, तो ये जो मोटर सिग्नल्स लेकर आने वाले न्यूरॉन्स हैं, जो मसल तक अपना सिग्नल लेकर आ रहे हैं, उनको हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं. On the basis of structure, we divide neuron into four parts. Number one is the unipolar neuron, number two is the bipolar neuron, and number three is the multipolar neuron, and number four are the N axons. Now, what N axons are? They are basically the neurons that do not have an axon. So, in the very first picture, we can see an N axon that does not have an axon. A nucleosoma or the central body of the cell is surrounded by dendrites only. While the bipolar neurons, we have a single cell body and the two sides are quite extended like the axons and have two large endings. The one is the dendroid and the other is the somatic terminals or the synaptic terminals, that are the nerve endings. Then comes the multipolar axonic neurons. Here the multipoles, there is a soma, then there is a this pole, this pole, this pole, this pole, and this pole. These are all the dendrite poles, and then comes the axon of the body. And here is the unipolar neuron that has one soma at the end and giving off two axons, or there can be even one axon that doesn't have any other end, only one soma and the axon. So these were the four types of structural neurons that are present in human body or can be seen. Then comes the synaptic transmission. So the next point to discuss about the neuron is the synaptic transmission. As we saw that the one neuron is transmitting its signals from the sensory detector to the other neuron, as well as the brain is sending signals and that neuron is transmitting its signal to the muscle that have to work or make a contraction. How this is actually happening? This is happening with the help of a synapse. Synapse is the junction between a neuron and the muscle, let's say, or a neuron and the other neuron. Here what happens? The meeting point between a neuron and any other delivery point or any other cell is called the synapse. The synapse between the neuron and the skeletal muscle cell are referred to as the myoneural or neuromuscular junction. सो जो साइनैप्स बनेगा एक न्यूरॉन और या जो जंक्शन बनेगी एक न्यूरॉन और मसल सेल के बीच में, उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. Here in this picture we can see here is a neuron and here is the muscle cell. So how the synapse is being performed?
दैट ये केमिकल सिग्नल्स होते हैं हमारे नर्व सेल के अंदर। जब कोई सिग्नल आता है पहले इलेक्ट्रिक फॉर्म में आता है और फिर वो एज अ केमिकल सिग्नल रिलीज होता है हमारे मसल की सरफेस पे। तो ये जो जंक्शन यहाँ पे बन रहा है बिटवीन अ नर्व सेल एंड अ मसल सेल इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एंड यही साइनैप्स का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये दो नर्व सेल्स के बीच में भी हो सकता है। अगर ये एक नर्व सेल है तो ये दूसरा नर्व सेल की सरफेस है जो पिछले वाले नर्व सेल से सिग्नल्स को रिसीव कर रही है इन द फॉर्म ऑफ दीज डॉटेड केमिकल। ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स हमें नजर आ रहे हैं इस पिक्चर में वो एक्चुअली सिग्नल्स हैं जो कि एक नर्व ने दूसरी नर्व को दिए हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं टू बेसिक पोर्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम शुरू करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। दैट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। The CNS protected by the cranium supporting the brain. So the vertebral column surrounding the cerebral cord and the cranium is surrounding the brain. What they are trying to say कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला क्रेनियम और स्कल का स्ट्रक्चर है और उसके अलावा हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर है वर्टिब्रास। सो जो बोनी स्ट्रक्चर्स हैं वर्टिब्रास के वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। उनके बीच में से सेंटर से स्पाइनल कॉर्ड गुजर रहा है। The CNS is bathing in cerebrospinal fluid. अब तीसरी चीज क्या आ गई है कि जो हमारा पूरा का पूरा CNS है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये एक फ्लूइड से सराउंडेड है फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम शॉक। This CNS is bathed in cerebrospinal fluid and is composed of grey and white matter. तो सारा का सारा CNS कुछ ग्रे और कुछ व्हाइट मैटर से मिलकर बना होता है। मोस्टली व्हाइट मैटर के अंदर न्यूरॉन की सेल बॉडी और डेंड्राइट्स होते हैं, जबकि ग्रे में एक्सॉन्स ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। हमारे मसल सेल से बने हुए हैं, स्मूथ हो, स्केलेटल हो या कार्डियक हो। उसी तरह हमारी स्किन के सेल से कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। हमारे नील्स स्पेसिफिक प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। इसी तरह हमारा नर्वस सिस्टम सेल्स से मिलकर बना हुआ है जिनको हमने नाम दे दिया है न्यूरॉन्स का। उनका हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया और हमने देखा कि ये थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट है और सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ग्रे और वाइट मैटर के अंदर। व्हाइट मैटर में मोस्टली सेल बॉडी और डेंड्राइट्स होते हैं और ग्रे मैटर में मोस्टली न्यूरॉन के एक्सॉन्स होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ब्रेन कैसा है ह्यूमन बॉडी का, विच इज द एक्चुअली कंप्यूटर सिस्टम ऑफ द बॉडी और CPU ऑफ द बॉडी वी से। तो brain is a semi-spherical but a soft and delicate and complex structure of or the organ of the human body. It is the central control and it is composed of estimatedly 100 billion neurons. So the brain is made up of 100 billion neurons according to an estimate. Anatomically, the brain is divided into three regions: the forebrain, midbrain, and hindbrain. Forebrain, midbrain, hindbrain. Here in this picture, we can see this is the forebrain. That yellowish portion we can see, this is the forebrain, right? The forebrain has two parts. The first one is diencephalon, and the second one was telencephalon. This is the telencephalon yellowish portion, and this brownish portion inside or embedded inside that yellow portion is the diencephalon. After that, we can see the midbrain here. Here, this pinkish portion that you can see is actually the midbrain or mesencephalon that is connecting the forebrain and the hindbrain. Hindbrain is colored in bluish and purple color here. This extended portion at the back, the loop-like portion, is the cerebellum, while this protruded portion at the front is pons.
and below the pons is medulla, which makes the myelencephalon, and that continues at spinal cord at time. Here in this picture, more parts are illustrated. On the forebrain, we have cerebral hemispheres, which is the telencephalon. Then comes the diencephalon, which contains thalamus and hypothalamus that is embedded inside that cerebral cortex. उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला. अब मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला मिलकर बना रहे हैं ब्रेन स्टेम और ये कंटिन्यू कर रहे हैं एज अ स्पाइनल कॉर्ड. एंड एट द बैक ऑफ द हेड, इधर पीछे बिल्कुल एंड पर, देयर कम्स द सेरिबेलम of the head that is basically making the functions of balance in our body. So the brain is lined by some membranes called meninges. This brain is being surrounded with the help of meninges or the protective layers. Just as we studied that the heart was protected by 3 layers, we studied that the arteries have 3 layers, we studied that the skin has layers, and then the superficial fascia and then the deep fascia. Similar to that, brain is also protected with the help of the coverings, which are called meninges of the brain. And the brain also conspicuously marked by the surfaces gyri, fold or sulci or grooves. Like the gyri are the folds that are present on the brain, and the sulci are the grooves that are present on the brain. So any elevated portion is called gyri, or the deep portion of the depression or the groove is named as sulci. So the brain has various gyri and sulci in its structure. Then comes the human brain is composed of the neurons in the neuroglial cells and as well as contains some blood vessels for its nutrition. Then comes the forebrain. Separately studying the forebrain, midbrain and hindbrain now. The basic structure contains telencephalon and diencephalon. Telencephalon contains cerebellum, while the diencephalon contains thalamus, hypothalamus, epithalamus and the pituitary glands as well. Watching what the cerebrum would be. First of all, the cerebrum is the largest portion of the brain. So this is the largest portion of the brain, or making the most mass of the brain, or the top of the brain, that is the cerebrum. So any injury on the top of the head would be an injury to cerebrum. It is divided into 2 hemispheres separated by the longitudinal fissure. So it has 2 hemispheres on the front, just as the 2 portions of the heart, just as the 2 portions of just as the 2 eyes and the 2 nasals. The brain has 2 portions, the left one and the right one hemisphere, which are divided with the help of a lining in the center of it, which is made up of fissure or the connective fibers. The hemispheres are prominently marked with the gyri and sulci. Each hemisphere is subdivided by deep sulci or fissures into the 5 lobes. So the forebrain or the cerebrum is further divided into 5 lobes. So 5 lobes for one hemisphere and 5 lobes for the other hemisphere. The first lobe is the frontal lobe in the front. Then comes the parietal lobe behind that. Then comes the occipital lobe at the very back, and the temporal lobe on the side. Let's see them one by one. Here, the frontal lobe, the most portion. Then comes the parietal lobe at the back. At the very back of the head, there comes the occipital lobe, and then comes the temporal lobe on the side. This is the side view of the brain for your convenience. Then comes the diencephalon, the major anatomic region of the brain that consists of the vital structures such as thalamus, hypothalamus, epithalamus and the pituitary gland. So how these structures are vital? These are the relying centers in the brain. All the messages coming from the cerebrum and cerebellum and all through the body are being relied here, and then this is the stop of all the messages. They come here, take a stop, being judged and sent ahead. Completely surrounded by the cerebral hemisphere of the telencephalon. So this diencephalon is basically surrounded by the telencephalon on its top. Here in this picture we can also see that the diencephalon is surrounded by the telencephalon. फिर आ जाता है midbrain. Midbrain is the short section of the brainstem
and it is present between the diencephalon and the pons. Pons is the portion of hindbrain. So it is basically connecting the forebrain to the hindbrain. The short segment of the brainstem that connects the midbrain and the hindbrain and the forebrain, and it includes the important centers of vision, hearing, pain, and motor control. So, what is its importance? That other than the function, it is connecting the two portions of the brain. It also has sensitive the units for the motor control and the pain sensory portions here, as well as the vision control and the hearing control are also present in this section of the brain. Then comes the hindbrain. What is the hindbrain? In the embryonic hindbrain differentiates into two subdivisions, that is the metencephalon and diencephalon. The metencephalon is the most superior portion of the hindbrain, while it contains the pons, which is about 2.5 centimeter long and forms a broad anterior bulge on the brainstem, just rostral to the medulla. So what they are trying to say that it makes a bulge on the front of the brainstem, which is named as pons, which is 2.5 centimeter long, most probably, and it conducts the signals down the brainstem and between the brainstem and the cerebellum as well. तो ये क्या करेगा, सिग्नल्स को स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ लेकर जाना अलोंग द ब्रेनस्टेम, या फिर ब्रेनस्टेम से सेरिबेलम तक लेकर जाने का फंक्शन परफॉर्म करता है. As in this picture we can see, this is the pons. मैसेजेस यहाँ से आएंगे और पोन्स के थ्रू आगे जाएंगे, या पोन्स सेरिबेलम से भी कनेक्टेड है तो ये सारे सिग्नल सेरिबेलम को भी प्रोवाइड करेगा. So the cerebellum is the largest part of the hindbrain. Here in this picture, the larger part of the hindbrain is cerebellum, and it receives most of the input in many ways from the pons. The occupies the inferior and the posterior aspect of the cranial cavity as well. So अगर ये हमारा head है एक cranium, तो सबसे पीछे वाला जो portion है वो cerebellum को provided है. Then comes the myelencephalon. The myelencephalon contains the medulla oblongata and the externally medulla that resembles the spinal cord. So the very last portion of the hindbrain would be medulla. The medulla continues into the spinal cord and इसका structure भी बहुत ज़्यादा spinal cord से resemble करता है. Then the meninges of the central nervous system, जिसको हमने कहा कि brain को 3 layers of the meninges cover कर रही हैं, वो क्या है? So from the superficial to deep, अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ move करें, the very first portion आ जाता है dura mater का. So the very upper lining of the brain, the very outer lining of the brain or the central nervous system is dura mater. So it is continuing in the spinal cord as well. Then comes the arachnoid matter, and then comes the pia mater. So the dura mater, arachnoid matter, and pia mater. Then we will see what spinal cord is and how it is controlling the parts of the human body. It is actually acting as a relay center. All the signals from the brain are transferred to the spinal cord and then sent to the body, and all the signals from the body come to the spinal cord and then sent to the brain with the help of the tracts in it. इसके अंदर ऐसे रास्ते बने होते हैं जिसके थ्रू ये सारी ट्रैफिक कंट्रोल हो रही होती है. हमारी बॉडी के सारे सिग्नल्स यहाँ तक आकर ब्रेन की तरफ जाते हैं और ब्रेन से सारे सिग्नल यहाँ पर आकर कंट्रोल होकर आगे बॉडी की तरफ जाते हैं. इट इज द एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो कि एक रोप की शेप का होता है, अगेन नर्व टिश्यूज का बना हुआ होता है. It begins as a continuation of medulla oblongata at the level of the foramen magnum. So there is a hole in the skull जहाँ से medulla extend करके spinal cord की shape ले लेता है और आगे हमारे vertebral column में run करता है. The spinal cord serves 3 principal functions. पहला है conduction all the signals, then the locomotion, it is controlling the signals of locomotion, and the reflexes. So there are some situations जहाँ पे सिग्नल ब्रेन तक नहीं जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से ही रिफ्लेक्स होके उसका आंसर हमारे मसल्स तक वापस आ जाता है. उनको हम रिफ्लेक्स एक्टिविटीज कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड इसमें हेल्प करता है. फिर स्पाइनल कॉर्ड है 31 pairs of the spinal nerves. It has 31 pairs of the spinal nerves, and as we know there are 30 vertebrae
So there are 31 pairs of the spinal cord that are spinal nerves, 31 vertebrae, 31 pairs of the spinal nerves are originating. The part supplies by each of the pair of the spinal nerve is called a segment. So the spinal cord is divided into cervical region, thoracic region, lumbar region, and a sacral region. So first of all comes the cervical region, then comes the lumbar region, then comes thoracic region, then comes the lumbar region, and then comes the sacral region. And this in this picture we can see here it is the cervical region at the back of the neck. Then comes the thoracic region at the back of the thorax. Then comes the lumbar region at the back of the abdomen, and then comes the sacral region, making the tailbones. So the spinal nerves that are originating from the spine, here you can see these are the spinal nerves originating from the spinal cord, are also in the form of pair, the left ones and the right ones, right? And they are in 31 total in number. So a cross-sectional anatomy of the spinal cord, we can say that the spinal cord consists of two kinds of nerve tissues. कुछ gray होते हैं और कुछ white matter होते हैं. The gray matter has a relatively dull color because it contains little myelin sheath, while it has a butterfly or the H shape. So the spinal cord has a butterfly or the H-shaped cross-sectional area. As you can see in this picture, this butterfly or the H-shaped area that is present in the spinal cord, this is the gray matter. And outside that, this butterfly portion is the white matter. जो न्यूरॉन्स ग्रे मैटर के अंदर होंगे उसके अंदर माइलिन शीथ नहीं होगी, जबकि जो न्यूरॉन्स वाइट मैटर के अंदर हैं, जो नर्व सेल्स वाइट मैटर के अंदर हैं, उनके ऊपर माइलिन शीथ या कवरिंग होगी. तो जो विदाउट कवरिंग वाले हैं न्यूरॉन्स वो ग्रे मैटर बना रहे हैं, और विद कवरिंग वाले जो है माइलिन शीथ के साथ हैं वो वाइट मैटर बना रहे हैं. इट कंटेन्स द सोमा, द डेंड्राइट्स एंड द proximal parts of the axons of the neurons. ठीक है, it is the site of the synaptic contact between the neurons. Information processing site होती है. So जो ग्रे मैटर बीच में सेंट्रल एच पोर्शन या बटरफ्लाई पोर्शन बना रहा है, ग्रे मैटर, दैट इज एक्चुअली द पॉइंट जहाँ पे नर्व्स अपने सिग्नल्स को एक दूसरे से शेयर करेंगे और ट्रांसफर करेंगे. जबकि जो व्हाइट मैटर है मोस्टली इसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं विच गिव्स इट अ ब्राइट एंड पर्ल लाइक अपीयरेंस. अब आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस. हमने देखा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स थे जिसके अंदर थे सोमैटिक और ऑटोनॉमिक. सोमैटिक था जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा था, और ऑटोनॉमिक वो था जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा था. द पीएनएस इज दैट पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर के सारे पोर्शन हैं, जैसे कि ओरिजिनेटिंग स्पाइनल नर्व्स थी और ओरिजिनेटिंग क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स, और जो स्पाइनल कोर्ड से निकलने वाली नर्व्स जो अब बाकी की बॉडी को सप्लाई कर रही हैं, वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेन करती हैं. The sensory receptors within the sensory organs, neurons, nerves, ganglia, and the plexus are all the part of the peripheral nervous system. The nerves of the peripheral nervous system are classified as the cranial nerve and the spinal nerve. Then we have the cranial nerves, the nerves that are originating from the brain and supplying the peripheral parts of the body are named as cranial nerves. There are 12 pairs of the cranial nerves जिनको हम नंबर देते हैं 1 to 12, एंड ये एक्चुअली इंफॉर्मेशन को ब्रेन से टू द पार्ट्स ऑफ द बॉडी लेकर जाते हैं. दे आर ट्रेडिशनली क्लासिफाइड एज सेंसरी, मोटर एंड अ मिक्स टाइप. सो जो ब्रेन से ओरिजिनेट होने वाली नर्व्स हैं वो सेंसरी भी हो सकती हैं, ब्रेन सिग्नल्स कैरी करके ला रही हैं ब्रेन की तरफ. उसके अलावा ये मोटर भी हो सकती हैं जो कि कंट्रोल कर रही हैं मसल्स को. उसका मिक्स भी फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं कि वही नर्व सिग्नल लेकर भी आ रही हैं और वही नर्व्स जो हैं सिग्नल पहुंचा भी रही हैं टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. In this picture, they have illustrated 12 nerves or the 12 cranial nerves that are present in the body. Number first is olfactory, that is originating from the nose and supplies sensory signals from the nose to the brain.
देन कम्स द ऑप्टिक जो हमारी आई को कंट्रोल कर रही है, देन ओक्यूलोमोटर अगेन कुछ आई के मसल्स को एंड फेस के मसल्स को भी कंट्रोल कर रही होती है, जो कि ऑर्बिट के इर्द गिर्द होती है। एंड देन द ट्रोक्लियर नर्व, उसके बाद ट्राइजेमिनल नर्व चलती है जो फेस की मसल्स को कंट्रोल कर रही है। अबड्यूसर नर्व अगेन आई के मसल्स को कंट्रोल करती है। फेशियल नर्व फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रही होती है। देन द वेस्टिब्यूलोकोक्लियर नर्व आ जाती है जो कि हमारे ईयर को और हमारे बैलेंस को, हेयरिंग को और बैलेंस को कंट्रोल कर रही होती है। ग्लोसोफेरेंजियल है, टंग से रिलेटेड होती है, फेरिंग से रिलेटेड होती है। वेगस नर्व है अगेन, हमारे गैग रिफ्लेक्सेस वगैरह यहाँ से आते हैं। देन हमारे पास स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है एक, और एक है हाइपोग्लोसल नर्व जो कि टंग से रिलेटेड है। सो ये हैं हमारी क्रेनियल नर्व्स। उसके बाद आ जाती हैं स्पाइनल नर्व्स। 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व के। 8 सर्वाइकल नर्व्स हैं जो कि C1 से C8 तक नंबर होते हैं इनके, ठीक है। इसकी तरह 12 थोरेसिक नर्व्स हैं, 5 लंबर नर्व्स हैं और 5 सेक्रल नर्व्स हैं, और एक कॉक्सीजियल नर्व भी होती है। इस तरह 31 पेयर्स बन जाते हैं हमारे नर्व्स के। The first cervical nerve emerges between the skull and the atlas. The other emerges through the intervertebral foramen. तो होता क्या है कि connections हैं, different joints हैं हमारी body के। सबसे पहले स्कल आता है, स्कल के नीचे एक वर्टिब्रा है, उसके नीचे एक वर्टिब्रा है, उसके नीचे एक वर्टिब्रा है, उसके नीचे एक वर्टिब्रा है। तो जो पहली नर्व ओरिजिनेट कर रही है वो स्कल और वर्टिब्रा के जॉइंट से कर रही है। उसके बाद जो सेकंड वर्टिब्रा और फर्स्ट वर्टिब्रा सेकंड वर्टिब्रा के दरमियान का जॉइंट है, उसके साइड से फोरामिना से, ट्रांसवर्स फोरामिना से नर्व ओरिजिनेट कर रही है। फिर जो थर्ड नर्व है वो सेकंड और थर्ड वर्टिब्रा के बीच में से कर रही है। दैट इन दैट वे हमारी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा में से 8 सर्वाइकल नर्व्स निकलती हैं। As you can see in this picture, all the spinal nerves are originating from the sides of the spinal cord. Then comes the autonomic nervous system. The autonomic nervous system is the motor nervous system that controls the glands and the cardiac muscle and the smooth muscle, the involuntary things of the human body. The primary target organ of the autonomic nervous system are the viscera of the thoracic and the abdomen cavity. तो एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी के विसरास को कंट्रोल करने का मेनली फंक्शन जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पास होता है। फिर ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम को दो में डिवाइड कर दिया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक वो है जो बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है, थोरेसिक नर्व और लंबर नर्व से, और इसका फंक्शन जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को कंट्रोल करना है। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक है ये रिलैक्सेशन में हेल्प कर रहा होता है, बॉडी को नॉर्मल सिचुएशंस में हेल्प कर रहा होता है। तो ये मोस्टली क्रेनियल नर्व और सेक्रल नर्व से मिलकर बना होता है जो कि नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी परफॉर्म कर रहे हैं। Here in this picture we can see in problematic sensation, जहाँ पर हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है वहाँ पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, और इन रिलैक्सेशन जब हार्ट रेट डिक्रीज होता है या फिर नॉर्मल होता है तो वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है काम। Thank you so much for listening for today. So these was all for the nervous system of the human body. So what we saw today, let us revise before going. We saw what is the nervous system of the human body is. We saw the divisions of the nervous system, central nervous system, peripheral nervous system. Central में हमारे पास brain और spinal cord था, जबकि peripheral में हमारे पास spinal nerve और cranial nerves थी। उसके अलावा some sympathetic and sympathetic nervous system था जो कि इन्हीं दोनों से मिलकर बना हुआ है। फिर हमारे पास आ गया कि नर्व क्या होती है, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या है। फिर हमने देखा कि ब्रेन के पार्ट्स क्या हैं, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन है, उनके स्ट्रक्चर देखे, उनके फंक्शंस देखे। देन वी सा स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है और पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड है 3 मेनिंजेस से, ड्यूरा मैटर, रेटिनोइड मैटर एंड पाया मैटर। आफ्टर दैट हमने देखा कि कौन सी नर्व्स ओरिजिनेट कर रही हैं स्पाइनल कॉर्ड से और कौन सी ब्रेन से ओरिजिनेट कर रही हैं, वो कैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही हैं और हमारी पेरिफेरी को कंट्रोल कर रही हैं। और फिर हमने देखा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड किया जाता है। सिंपैथेटिक हमारे सिंपैथी के टाइम पे यानी कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हेल्प करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्सेशन के लिए हेल्प करता है। सो thank you so much for listening everyone. Hope this lecture would be helpful to you, and best of luck for the another lecture which we will studying after in the next class inshallah. So Allah Hafiz.